आदाब। मैं हूँ दीक्षिता और स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से हमारे नए कुकिंग शो बाय लेन टुडे में। सो टुडे वी आर मेकिंग मटर और पनीर के कबाब्स एंड विद दैट आई एम गोइंग टू ट्विन इट विद पुदीने और दही की टैंगी वाली चटनी। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी फन। सो द की इंग्रेडिएंट्स जो कि मेन चीज़ें हम लोग उसमें यूज़ कर रहे हैं वो ऑब्वियसली है मटर विच इज़ पीस एंड देन बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटोज which is आलू उबला हुआ मैश किया हुआ and one more thing which is what I'm using here is paneer. We need shredded paneer for that and there are a lot of masalas तो वो आपको मैं जो बनाते हुए along the way I'll be telling you all. So yes, let's start. So for tikkis, put a drop of oil in hand and then you have to take a spoonful of mixture and make small round tikkis. You can make it in any shape, it's up to you. So yes, and that will be done. And then you can put almond or cashew or raisin, whatever you like, or at the top. It's optional. If you don't want to put, it's completely fine.
पनीर की कबाब बन के रेडी हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं एंड दे लुक डिलिशियस। सो नाउ इज द बेस्ट टाइम आई एम गोइंग टू टेस्ट देम। सो देरी किस बात की, चलो शुरू करते हैं। Cheers! Delicious, trust me, you really want to try it. I mean, this is the best time to have kebabs along with this dahi wali pudine ki chutney. It's a wonderful combination. It's a go-to combination. You all must make it. Also जो हमने इसमें पनीर ऐड किया है ये बहुत ही अच्छा सॉफ्ट मॉइस्ट है अंदर से, which is even like mouth melting I would say. And also I've added in this these almonds, which is badam. The roasted almonds even increases the flavor. So it's a go-to dish. I think you all must try it. It's very good. And yeah, so I'm going to enjoy my meal. You also please try and share कि आप लोगों को कैसा लगा. Thank you so much. Bye. Take care everyone. Hope to see you soon. Inshallah.